open our syllabus page at page 3 and help me recollecting what we have covered and how we should prepare from exam point of view. This is something, a revision class. All of you should help. Let me just try and you please supplement if I have missed anything. Some of you, again, I'll repeat, some of you please switch on your video. I think some of you are shying away. Please participate. I guess we can start with perhaps little bit of what we have done on dispersion. All of you quickly start writing. That may be of help, which includes CV, and then we perhaps have covered something about the probability concepts, theories, right? Thereafter, I guess we had done probability distributions. In probability distributions, if you recall, we had binomial, we had Poisson, we had normal distributions. Okay, then one of the important chapter that we concluded was testing of hypothesis. Here we have covered so far large sample test, small sample or t-test, and chi-square test. Am I right? And in between, we had something theoretical again on sampling and estimation. Okay. Deliberately, I have used two colors. Hope you can guess. These two will be giving less importance, and mostly there would be theoretical questions. Theoretical means objective question. So that's why I have put in different colors, and these two numerical sum we can expect. Okay. So can we quickly start? Have I missed anything? Suyasi, Bhaskar, Sohon, anybody else? Yes, sir. Is it okay? Sir, Yes, can you please repeat again? Repeat what? So theory and numerical. That part. Yeah, I'll do that. Red letter, mostly theory. Blue color lines are for numerical sum. Am I audible? Yes, sir. So I guess like this is what we have covered, and you can plan your preparation accordingly. What I was suggesting, maybe like we can quickly review this, and just to start with, can I trouble you, Suyasi? In dispersion, if we take the most common measure, that is standard deviation, Yes, sir. the difference between standard deviation and CV, I'm asking difference. Then next, Bhaskar, get ready. You can have your coffee side by side, you can answer. And I would request all of you, don't waste time. If you do not have answer, say pass. So pass. Bhaskar, pass. okay. Any volunteer or I'll take over. Sir, Any, can please, thank you. Sir, disperse. So CV, sir, is the relative variability between two variable. Wow, wow. Thank you so much. I will just supplement what Supratik has correctly tried. Standard deviation, only one group, one sample, one product, if you are finding the variability or scatteredness. Let me start with both CV and standard deviation measures the scatteredness or dispersion or variability, but the difference is, as Supratik tried correctly, standard deviation you will be applying when you have got only one case, when there is a comparison. You have to have CV, then only you'll be making comparison. All of you please remember, mid-time there was a question, how to judge which batsman is better. So Pratik, am I right?
So there, I think most of you have done wrong. Nobody used CV, so you missed some mark, right? So this is what, like, I think 1 mark, 2-3 sentence is more than enough. Let's move quickly to probability concepts. Any volunteer, what can perhaps we can expect theoretical questions from this section chapter probability concept? The best. So events, So types, Sir, mutually exclusive events, exhaustive events. examples. classical, With example and definitions. Okay, Helena is perhaps, I think, suggesting something. so 3 types of approaches, classical, and where did I write? Okay, which example we can give, and what Helena, Sohon, Vaskar, they were telling, which we also had in mid-sem, equally likely, mutual exclusive, mutual exhaustive, all those things you will be doing it. Then anything else Supratik would like to add? What else we can expect from probability concept? All of you requested to be quick, and if you do not have anything to suggest, say pass. So what is Bayes theorems and all? Wow. I think he has read my mind. Telepathy है, सवेरे सवेरे पिकअप कर रहा है, एंटीना बहुत स्ट्रांग है सुप्रतीक का. So there was something like inverse probability का formula कहाँ apply करेंगे, conditional probability and inverse probability, right? So those things briefly you can please have a quick brief preparation. Okay, so I think we need to move forward. Those first 2 sections are very briefly. I won't mind suggesting you that this could be either it may come or may not come. Question mark is that if it comes like 1 or 2 mark max. Okay, so question mark, you understand, there is no guarantee. And similarly here also, am I giving you some hints, Bhaskar? Is it okay? Is it very clear and loud? So moving forward, we'll be moving to probability distributions, and all of you are requested to move quickly to the QT handbook pages, and all of you are required to suggest me some interesting, good, probable questions from exam point of view. All of you put your minds together. Who can, we'll be starting from binomial. From binomial, can you move to model questions given towards end of the handbook? What would be a good question to solve from exam point of view from binomial distribution? Am I right? Model question set 1. What is the page number? Somebody should help others. And So page Sir, 80. page 80. okay, Suyasi, Fadafat, help Kar, do me a favor. Put in a WhatsApp group. All should move to page 80. Question number 2. You write that, what I'm just telling, you will be communicating through WhatsApp group so that we are together at one page. Vaskar, can I trouble you, dear? Get it with your pen. You are solving question number 2. I'm with you. We all together will be solving question number 2. So whoever will be solving using whiteboard should write question number and page number at the top, and others should quickly write that in your notebook. Today we'll make a principle. Suyasi, Bhaskar, Debesh, if you agree, we'll be selecting few volunteers from your batch section. One will be taking up one question. You'll be solving in whiteboard here, and later today afternoon you'll be solving neatly again in a pen and paper, and you'll be circulating the answer in your own WhatsApp group for the benefit of others, so that together you can get the best answer, right? Bhaskar, while you are waiting, सर क्वेश्चन नंबर लिख रहा था पेज पे. कहाँ लिख रहे हो? व्हाइट बोर्ड में लिखना बोला ना. व्हाइट बोर्ड में लिख. अरे भास्कर, मैं तेलुगु में बोलूं या बंगाली में बोलूं? अरे व्हाइट बोर्ड से मैं सर अपने रेफरेंस के लिए लिख रहा था. क्वेश्चन नंबर लिख रहा. हो गया सर, हो गया. आज टाइम सेव करना पड़ेगा रे. उधर लेख ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 पेज 80 करके जो मैं बोल रहा हूँ, अगर तुझे अच्छा नहीं लगे यू कैन राइट योर ओन वर्डिंग. ठीक है,
Suyasi, Sohan, Binapani, others, you can help me. Should I write here n equals to 6? जो मैं बोल रहा हूँ, भास्कर Yes, ले, sir. जल्दी ले, Yes, sir. फटाफट. Let us save time. Yes, sir. देखना, बोल दिया ना. Let n equals to 6. Equals to 6. अरे स्मॉल n लिखना पड़ेगा. Make a practice. कैपिटल n नहीं है रे, रॉन्ग है. सभी लोग लिखो. No capital N, small n. Next leg P3 capital P bracketed 3. मैंने बोला कैपिटल P रे. Equals to Equals to फॉर्मूला क्या रे? 6x 6c3 into p to the 6c3. p to the power 3. अभी स्मॉल p लिख. अभी स्मॉल p लिख. भास्कर सुन रहे. भास्कर मुझे देख रहा है. सुन. ये स्मॉल p राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में कैपिटल p का अंतर, डिफरेंस समझता है ना? Yes, sir. Yes, sir. लेफ्ट हैंड साइड में सिंबल है, राइट हैंड साइड में प्रोबेबिलिटी वैल्यू. Forwarding in. Yes, sir. प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग कैपिटल P इन द फॉर्मूला साइड. ठीक है ना? Okay, sir. Yes, sir. अभ्यास करो. हाँ, ठीक है. इक्वल्स टू आगे लेख. इक्वल्स टू Equals to 0.2457 उतना लिखा है ना? सोयासी. Yes, sir. और नीचे लेख P4 कैपिटल P ब्रैकेट 4 इक्वल्स टू फॉर्मूला एक्सपेंड कर 6c4 p to the power 4 q to the power 2 equals to 0.0819. ओके, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मैं जो बोल रहा हूँ सुन. आई नो यू नो बेटर आंसर. वो जो फ्रैक्शन लिखा है ना राइट हैंड साइड में, Yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन के बीच में एक लाइन खींच. ओनली फ्रैक्शन का. ओ अरे रुक रहे. ओनली फ्रैक्शन के अंदर. Yes, sir. यस. सो दैट इसका मतलब राइट हैंड साइड को डिवाइड करेंगे. फिर से जो 6c3 लिखा है ना, 6c3 pq, वहां भी लाइन डाल. बस बस बस, समझ रहा है ना? Yes, सो sir. इसको हम कैंसल करेंगे. सभी लोग कोऑपरेट करो. ये P3 और P4 कैंसिल हो जाएगा. P3 को स्ट्राइक आउट कर. यस. एंड P4 से 4 को हटा दे. 4 को स्ट्राइक आउट कर. वेरी गुड. और Q2 को कैंसिल कर. ऊपर 3 को कैंसिल कर. ठीक है? Yes, sir. नीचे इम्प्लाइज सिंबल डाल. वेरी गुड. कितना बचा? 6c3 कितना रहे? सोयासी. कोई बोलो. Sir, फटाफट. 20. लिख रहे 20q अपॉन 64 कितना रहे? 15. 15. लिख रहे 15p इक्वल्स टू, ये दोनों को डिवाइड करके बोलो कितना हुआ? Sir, around 3 आएगा शायद. हाँ 3 लाख. थैंक यू. अभी सुन. नेक्स्ट इम्प्लाई लिख के q की जगह 1 - p लिखेंगे. लिख जल्दी लिख. और ये 15p को उधर ले जा. नहीं राइट हैंड साइड पर ले जा. 3. हाँ वेरी गुड. और ये सॉल्व करके p वैल्यू मिल जाएगा. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एनीबॉडी हैविंग डाउट? No, sir. Anybody having doubt, you can ask me. Bhaskar, my request to you, ये जो क्वेश्चन है इसको डिटेल सॉल्व करके हाँ, sir. पेन एंड पेपर में स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेगा. ठीक है? Yes, sir. मैंने क्वेश्चन नंबर इसीलिए लिखे पेज पे already. हाँ, बाद में करना. बिना पानी गेट रेडी. क्वेश्चन नंबर 1 बोल. स्टॉप शेयरिंग भास्कर. Yes, yes, yes. बिना पानी. Yes, sir. बिना पानी. देन शीतल पानी रहेगी. शीतल है क्या? शीतल. हाँ, sir. हाँ. बिना पानी नो कोयले. यू गेट रेडी. बिना पानी, don't let us not waste time. Try. We all will help you. Give a try. Don't give up. In case you find difficulty, you can say pass. No, don't worry. We'll be saving time. क्वेश्चन नंबर फिर से बोलिए. कौन सा क्वेश्चन? One. Question one. ऊपर वाला क्या? Vegetarian. बिना पानी होगा. Yes, sir. Sir. Can you share whiteboard? Sir, पेन नहीं है मेरे पास अभी. अच्छा, सोहन तेरे पास है रे? Yes, sir. अभी जल्दी कर. Yes.
ये ट्राई कर, we all will help you. Here n equals to, पहले क्वेश्चन नंबर ले, क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 80. ये क्या कर दिया? Question number 1. ओके, छोटा छोटा अक्षर में लिख ये. Here n small n equals to 10. 10. नीचे लिख small p equals to small q equals to half. Equal to half 0.5. 0.5. क्वेश्चन क्या चाहिए? क्वेश्चन में क्या लिखा है सुयसी? So, You expect 3 people. 3 or less. 3 or less. Yes, So sir. capital P bracket x less or equal to 3 Yes, sir. yes. equals to expand कर कितना होगा रे? So So 10C0, नहीं रे, step by step. P0. P0 plus P1 plus P2 plus P3. Very good. अभी expand करो. All of you should write step by step. 10C0. 10C0. अभी देखो P और Q इक्वल है. Yes, sir. सुयसी बिना पानी सोहन. Can you write 0.5 to the power 10 together? Yes, लिख sir. सकते हैं क्या? Sohan, सकते हैं. are you Yes, yourself clear? Sohan, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 0.5 to the power 10 plus 10C1 0.5 to the power 10. फटाफट लिख स्पीड कर. Yes, sir. आगे लिखना आगे. Yes, sir. Plus 10C2 into 0.5 to the power 10 plus 10C3 to 0.5 to the power of Okay, next line 0.5 to the power 10 take common. into Bracket. 10C0. Bracket 10C0 कितना रे? 10C0 1. So 1. 1, sorry. So direct value नहीं देगा. हाँ डायरेक्ट So वैल्यू. 1 plus 10 plus 45 plus 120. हाँ लेख जो सुयसी बोल रही है लेख रे सोहन. 1 plus 10 Plus 10 plus 45 plus 45 plus 120. plus 120. ठीक है छोड़ दे. सो सोहन कैन आई रिक्वेस्ट यू ये क्वेश्चन को कंप्लीट करके इन पेन एंड पेपर यू विल बी सर्कुलेटिंग अमंग योर फ्रेंड्स इन व्हाट्सएप ग्रुप. ठीक है. Okay. Yes, sir. थैंक यू. स्टॉप शेयरिंग. और रिधि बानोवाल से और क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है? Sir, sir, बोल sir, I have doubt in this question actually, sir. बोल. Sir, after that p x less than is equal to 3 will come something in fraction. उसको तो 100 से मल्टीप्लाई करने से वो भी अगर फ्रैक्शन में है तो उसको क्या करेंगे? नेक्स्ट नंबर करो होल नंबर करो. Whole number. मतलब नेक्स्ट होल नंबर ले लेंगे तो हाँ कर सकते हैं यहाँ कर सकते हैं. यहाँ कर सकते हैं. राउंडेड नेक्स्ट नंबर कर सकते हो इफ इट इज हायर देन 0.5. ओके वरना छोड़ देंगे लोगों को. हाँ. ये काम आना. Riddhi, save time. Do you have any suggestion? Any interesting question? Supratik next, Debes next, Sheetal next. जल्दी करो. All of you requested save time. नहीं तो पास कर. सर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में तो और कुछ है नहीं. है नहीं? क्या बात कर रही है? Diana Branch. Supratik, what is the question number? Page देखो. Question number 11 देखो रे. Page number बोलो. Yes, sir. Question number 11, page number 81. Diane Bronze. You pass it on in WhatsApp group so that all can refer quickly. We save time. Yes. प्रतीक दास तेरे पास पेन है? प्रतीक. Yes, sir, I have. Give a try. We all will help you.
फटाफट करो जल्दी. All of you save time. We have to cover all chapters. Question number 11, page. Page कोई बोलो शिवासी. Page, So page 81. pages. 81. यहाँ like small p equals to, what is the probability, Pratik? 0.4. Very good. Shuyasi is helping us. Pratik, fatapat, right? Q is 0.6. First bit, you write bit A. Bit A में क्या करना है? We have to find Pratik, more small than eight. q. Okay, sorry, sir. All Q, Pratik. Small. Bit A First will be probability of x greater than 8. Very good. All of you take care. It is only greater than 8, not greater than equal to 8. Yes, sir. Greater than 8. Capital P लिखना. प्रतीक जैसे Yes, sir. capital P x greater than X greater than 8 close equals to. equal to probability of 9 plus probability of 10. Good, very good. Thank you. Expand कर प्रतीक. 10 C9 Yeah, 10. into 0.4 to the power 9 and 0.6 to the power 1 plus 10 C10 0.4 to the power 10 and 0.6 to the power 0. Leave So there. done. हाँ, done. 8. Thank you. Yes, sir. इसको expand कर सकते हैं. प्रतीक, sir. first question है प्रतीक. Sir, yes, sir. I have. Second bit, what should be done? Pratik alone to answer. Let me- So we have to find P is equal to like three. What will say? Three individuals have jobs. So. Should we write P lesser equal to 3 or greater than equal to 3, Pratik? Sir, only three means. Wow, thank you. I just wanted to confuse you, just to know your confidence. It's just capital P3. Like second B bit, like niche. Should I rub this A part? No. Just one line. I want. P bit. You just write capital P3. That's all. You have to, Pratik, Yes, you sir. have to solve this on a paper and circulate the answer, right? Okay, sir. Stop sharing. Next, I think we should move to Poisson distribution. Yes, sir. All of you listen to me. Pratik Biswal, you are there. Pratik Biswal, you are there. Yes, sir. Poisson distribution, I guess, like belongs to continuous distribution. हाँ या ना बोल प्रतीक, unmute करके, save time. Yes, sir. Yes, sir. You are a very obedient student. Yes, sir. I will always try to confuse you. No. अगर नहीं है तो हाँ होगा, हाँ हो तो नहीं होगा. This is discrete distribution. Discrete, sir. Yes, sir. Why confusion? Or the probability is given by e to the power minus m. Swayam फटाफट लिख रहे. M to the power x. Riddhi, all of you do practice. बिना पानी why you are sitting idle? ठाकुरानी भले बसचु कौन? Like फटाफट. लिखो sir. Factorial x, where x equal to what? बिना पानी बोल, जल्दी बोल. What are the values of x? 0, 1. अरे बोल रहे. Riddhi, what are the values? Unmute करके बोल रहे. Where x is equal to What are the values? Swayam,
Sir, 1, 2, 3, 4, 5 up to n. जीरो को क्यों छोड़ रहा है? जीरो को तू छोड़ेगा तो जीरो ही मिलेगा, ठीक है। जीरो से शुरू होगा, कहाँ तक होगा? इन्फिनिटी। Infinity. Yes. डोंट फॉरगेट जीरो। जीरो इज ऑल्सो मिस्टर क्लीन वाला इम्पोर्टेंट नंबर, ठीक है। Yes. शायद सुयसी, I might not have told, if I find probability for each point 0, 1, 2, 3 and I find the probability here, and can you guess what would be the total if you add all total? What would be the total? 1. Wow, all of you note it down. It's a part of GK kind of thing. If you add all probability, it must add up to 1, right? 1. Yes. And we'll take a few questions. Can we take up one? Aniket, you got a pen? Aniket Patwari. Yes, sir. Okay, we all will help you. Can you? No, sir, I don't have any pen, sir. Wow. Why, Sir, dear? you are. शुभम है क्या? शुभम अग्रवाल? यस सर, नेटवर्क इशू हो रहा है इसलिए सर। अरे कोई वॉलंटियर करो रे, ऐसा नहीं कि दो चार ही सब करेंगे, आप लोग चुपचाप बैठोगे। रुबल, रुबल तेरे पास पेन है? अंजलि सिन्हा, रुबल, हाँ या ना बोलो, जल्दी बोलो। Okay, Washington Monument Bala, Suyasi, what is the page number? Question number 15. You put it, Chinmaya, you are there, Chinmaya? Sir, page 82, question number 50. You Page number 82. put it in WhatsApp group so that all can there. I want new volunteers. Please come forward. Who can solve it? I think Suyasi herself has not done. I would request Suyasi to please take over. You got a pen? Not work. Yes, sir. We all will help you. While writing, you write the question number, page number first on the top, then we'll solve. So here, can you briefly, maybe like in one sentence, if you recall, tell us what is the question all about? You needed fund to install a machine to scare away the birds, right? And funds may be allocated subject to a condition. What is the condition? So That- less than. Sir, if the probability is more than 3, then the funds will be allocated. If the probability of more than 3 is greater than 0.7. 0.7, Yeah, yes, yeah. sir, 0.7. So you see, you write here M equals to how much M? Small m? 5. Niche leg. Funds will be allocated if. Wait, so Probability x greater than 3. Again write greater than. यहाँ तो लिखा था ना? Okay, Yes, ठीक sir. है. Greater than ray. Greater than- Yes, see. 0.7. 0.7, right? Suyasi, I think you must be knowing what is the meaning of LHS. What is LHS? So left hand side. Right, you write that, niche LHS equals to, वहीं आगे लेक LHS का आगे equals to P 3 के आगे कितना? Greater than 3 का मतलब after 3 0. what? You write P4 plus P5 dot 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 up to infinity. All of you should write like this step by step equals to नीचे leg. कैसे करेंगे Suyasi? Any suggestion? 1 minus 1 minus Yes, sir. So 1 minus P0, P0, P1, P2. P1, P2, P. all of you note, nobody should forget 0. स्वयं सुन रहा है स्वयं? Yes, sir.
Swayam, give a try. P0 expand कर. So वैसे like 1 minus bracket start. छोटा छोटा अक्षर में like small letter. Swayam जल्दी try कर रहे. Sir, E E minus to the 5 power M minus 5 m to the power M to the power of 0 factorial 0. Zero Yes. Plus E to the power of minus 5 to the power 1 by factorial. Dot dot कर दे. Last number करेंगे. अभी सुनो यहाँ you can take e to the power minus 5 common, right? It will Yes, be sir. time saving and you can do it. So Yasi, can you stop here? I request sir. you solve it completely. You Yes, need to calculate the answer. That will be better, right? Yes. Now, who is the next volunteer? Sital, can you write? Sital, you got a pen. Yes, so I'll try. Thank you. That's like a nice girl. Let's solve concert pianist Donna Prima. Donna Prima, question number 14. I think the page number 82. Am I right? Yes. Yes, sir. All of you read that question. Binapani, are you getting the question? Yes, sir. Yes. Sital, you write here m equals to 8. 8. Sital, first write the question number, page number, so that your friends can note. You write the question number, page number at the top. Somebody should tell Suyasi, help. Question number. Page number 82 number and question 82, number question 14. Very good. Thank you. Now, please read, Sital, the last sentence. What is the question? What is the chance that she will play tonight? When she will play tonight? So, and If Sital, there you are write. less than 5 conflicts in the Sital, you write. She will play tonight if More than 5. she hears less than 5 coughs. Okay, next line leg. That is P, capital P, X less रहेगा, less than equal to रहेगा. so less than equal to. अरे क्यों? Okay, okay, right. Less than equal to like 5. yeah. Equals to expand कर अभी P0, P1. Up to what? Dot dot कर दे last number ले. to P5. Okay, just expand one term. Others will do. Will not take much time. P0, how much it will be there, Sital? E to the power. E to the power of minus 8. 0.8, no? नहीं, No, 8 no, just 8. Minus 8. into 8 to the power 0 by factorial 0. Okay, plus dot dot you do it. Sital will be solving this question and sharing among your friends, right? Yes, sir. Okay, stop sharing. Nidhi, you were there? Nidhi, and then Suraj Singh. Nidhi, am I audible? Yes, sir. Suppose I am changing this question. First, listen to me. What is the chance that she will not play tonight? What should be done? So 1 second. That means you are not reading the question. Supratik, तो 1 माइनस ये टोटल कर दीजिए. हाँ नहीं स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे ना तो फर्स्ट Greater than 5. हाँ वेरी गुड ग्रेटर देन 5 उसके आगे हाउ मेनी टर्म्स विल बी देयर Sital?
3, 6, 7, 8. 6, 7, 8 so on. 6, 7, 8. 6, 7, 8 उसके है बाद ना? 1 माइनस, Yes, sir. हाँ उसके बाद 1 माइनस P रुको of रुको 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 6, 7, 8 ना सोन? Sir, 1 minus P of 6, P of 7, P. अरे No, sir, P 6, of 5. Sir, P of 5, P of 6. वही कंफ्यूजन है एक्चुअली. मेनी स्टूडेंट्स प्रीवियस बैच दे डू मिस्टेक. सूरज सिंह है क्या? सूरज सिंह, Yes, sir. Yes, sir. कैन यू सॉल्व दिस? Yes, sir. Yes, sir. शेयर कर व्हाइट बोर्ड. क्वेश्चन क्या है? सर वही कि वो क्या मतलब कौन सा सिचुएशन है जिसमें वो प्ले नहीं करेंगे? हाँ, अभी व्हाइट बोर्ड में कर क्या करना पड़ेगा? Why I am giving importance here? From my experience, I'm just telling you, sometimes students do silly mistakes. So yes, I'll tell you a bit later after 2 minutes what mistake people do. Yes. क्या होगा? सर इसमें सिचुएशन होगा कि सर P इज ये सर लेस देन इक्वल टू 5 था, तो इसमें ग्रेटर देन होगा सर. लिखना. यस सर. Please write. यस सर. ग्रेटर देन 5 सर. हाँ, तो expand कर. Equals to how many terms आएगा? सर 8 तक आएगा. 6, 7, 8. Very good. यही Yes, mistake सब. सुनो. Suyash is also supporting. Just pick, it's written, no? सर उसमें इंफिनिटी तक आएगा. n सर 8 लिखा है. Stop N sharing. तक आया. Suraj, stop sharing. It will goes to infinity. अरे सुन रे भास्कर, सुन. You just allow to have their doubts. अगर डाउट्स आएंगे तब तो क्लियर कर पाएंगे ना भास्कर. अभी मजा देखना. Even Suyash is also having the same confusion. No, sir, no, sir. It will be to the N. Like 8 Sir, तक it will नहीं be होगा. सूरज. यस अरे सर. सूरज कहाँ तक आसमान में रहेगा? सर इनफाइनाइट. हाँ, तो क्यों 8 तक को 8 बजे तक तो सूरज रहेगा? कौन बोला कि कॉफिंग विल बी अप टू 8? 8 से ज्यादा कॉफिंग नहीं होगा. होगा सर. अच्छा सुनो, आई एम जस्ट शेयरिंग फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस. लास्ट ईयर सीनियर्स आल्सो आई मे चेंज ए क्वेश्चन लाइक दिस. भास्कर सुन रहे हैं ना? Yes. अगर चेंज हो गया ना वो 6, 7, 8 करेंगे. बिना पानी आर यू गेटिंग इट? बिकॉज एवरेज लिखा है 8, so people are tempted to add P6, P7, P8. So yes, you are getting me? And they get how much mark you will be getting if you write this? So 0. Only Zero. स्वयं सुन रहा है. जीरो का महत्व तो सुन रहा है. हाँ सर. हाँ. So ये सूरज ठीक से सॉल्व करके सर्कुलेट करेगा. यस सर. आ रहा है? यस सर. अच्छा, एक क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करेंगे. भास्कर देख रहे हैं वो जो प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4. Is it page 80 or I don't know. Question number 4 हो पाएगा? I think we have done this. Can you just please tell what is the question? What should be done? If 5% yes sir. Explain to the class. Don't waste time. Here is given the 5% electricity. दिया हुआ है कि 5% electricity bulb manufactured by company are defective. तो बोला है Poisson distribution यूज करके 100 सैंपल का हम लोगों को निकालना है. From so what will not take the aim actually? अरे वही तो पूछ रहा हूँ, तो मुझे पूछ रहा है. अच्छा सॉरी सर. 5%. अच्छा हाँ. 0.5. So NT. 0.05. 5. Whole number 5. Yes. वही तो लिखा है ना गिवन. 5% 100% 100 दिया हुआ है. Yes, sir. 5% into 100 is 5. सुप्रतीक ठीक है ना? यस सर. So फर्स्ट बीट का आंसर क्या होगा सुप्रतीक? क्वेश्चन है या नहीं? क्या कर रहा है? Yes, sir. Given sir, none is defective.
अरे कोई तो बोलो. Sir, P0. Only P0. Thank you. P0, yes, sir. Supratik, tu bhi na. Why you are confusing? So you ask what is the second bit? So 5 bulbs will be defective. Only So P5. Only yes, sir. 5. Okay, simple. No less than, no greater than kind of. No confusion. One turn. Okay, clear? No Yes, sir. confusion. ठीक है. Yes. बाकी जो है आप लोग देख लेना. अगर कोई क्वेश्चन है, let me move forward because we'll be discussing other chapters. Next is normal distribution. Now all of you are requested एक एक करके आज those who have not participated so far, I would be requesting them to tell me the properties of normal distribution. एक एक करके बोलो. New volunteers, those who have not participated so far in this class. अरे volunteer करो ना. So continuous. Continuous का मतलब क्या है? Sir, it can be from negative to positive infinity. From negative to positive मतलब खड़गपुर से हावड़ा तक. Negative to positive. कौन बोल रहा है? Someone says fractional. अरे that is 1.5, 2.5. Sir, curve is perfectly symmetrical and well-shaped. one by one. उसको help करो रे सभी लोग. वो क्या बोल रहा था? कौन बोल रहा था? सर मैं शशांक सर. Continuous means सर 1.5, 2.5 ऐसे भी आ सकता है. अरे तू बोला ना नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक. भास्कर संबंध ने बोला. नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी. अरे भास्कर इसका only positive. नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक इसका मतलब कुछ होता है? सर नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी. सर only positive होगा. माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी बोलोगे. Yes, sir. ठीक है, इंक्लूडिंग फ्रैक्शनल. यस, नेक्स्ट. स्वयं कुछ तो बोल. So symmetric, continuous. अरे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का 12-15 प्रॉपर्टीज हैं. बोलो सुप्रतीक बोल. So symmetric. नेक्स्ट. So continuous. आगे बोलो. हो गया रे. Mean value is at center. The center of normal value Mean value is at center. At center what appears? mean value. Mean value, sir. और कुछ? Something The like original value should be converted into a standard score. हाँ, और उसके आगे? So both sides equal to 1. Yeah, so whole area probability will be 1 and each side will be 0.5, right? Good. Yes, sir. Anything else? So all symmetric curve may not be The normal, but all normal curve is always symmetric. Wow, good, great. Anything else? Something So important? mean, median, mode तीनों आएगा sir center पे. I'm sorry? So mean, median, mode तीनों वो sir. Wow, great. Yes, sir. So please all of you remember this. At center, mean, median and mode will appear and coincide. Thank you. Interesting Yes, point. sir. Anything else? So Something bell-shaped curve. हो गया रे, हो गया. कुछ बढ़िया सा बोलो. Empirical rule, sir. हाँ, और कुछ? All of you should So participate. 3 types of curve like leptocortic, mesocortic. वो तो नॉर्मल में नहीं होगा ना. मेसोकोटिक ही नॉर्मल. एक्चुअली आप लोग को जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है ना, Yes, sir. that you have to tell. That is one of the important property. If you have 1 times standard deviation interval, 2 times standard deviation interval, 3 times standard deviation interval, इसका जो probability है, if you mention the probabilities, that will really impress the examiner because you are giving solid number. So this is 0.9972. Okay. If somebody writes this, Bhaskar, I think naturally the examiner will understand that he or she knows
the main points, because numbers you remember, it's not like a story kind of thing. So other numbers also you have the property, that's part of the normal property, you'll be doing that, right? And from normal distribution, we have solved most number of examples. I guess around 15 examples you have done or more than that, if I remember correctly. Okay, so all those questions we will not be in a position to cover, but all of you please have a look how we have solved normal distribution questions. So on, I think we had suggested if you get a normal distribution question, better to follow a few steps. What are the steps? Sir, first we should write the n values. X values you write and you convert to Z value. Z value. X minus Y sigma. Then draw a normal curve. Draw normal curve. Okay. Next. So normal table. So mark the area. Then conclusion. Conclusion. Okay. So these steps if you follow, that would be interesting. Okay. So normal distribution questions. Can we take out question number 10? Other questions? Yeah, please ask me. So table value will be given to us, or we have to look to the table in the exam? Naturally, we cannot remember all values. No, if it is not given in the question, so you can refer normal table. Okay. Now, who can take off question number 10? First, one should explain the meaning very briefly. Knock door. All of you getting? All of you participating or not? Yes, sir. Someone like. अरे कुछ लोग कुछ लोग स्विच ऑन करो रे वीडियो. Smita Chatterjee, you are silent today. Yes, sir. Yes, sir means you are silent. Yeah, sir. Actually, I'm out of town. I had a mishap in my family, so I'm just listening to the class. Any new volunteer? Rerona, Yes, sir. explain the question. What do you have to do? You have got the question. हाँ या ना बोल जल्दी बोल. हाँ yes. बोल. Knock door company वाला yes. हाँ. करना क्या है? Shinjini get ready. Shinjini and Prerna. Can you share a whiteboard and write something? Yes, sir. Wow, great. Very good. Thank you. We all will help you. Thanks, dear. Draw a normal curve straight. Top में question number लिखना. Question number 10. Page number कितना? Suyasi. 81. Page 81. लिख. Question 10. Page 81. नीचे एक draw a normal curve. Okay. At center, draw a vertical line. और नीचे like what is the value of mean? 73 inches. Some should help. Suyasi. 73. 73 inches. Okay. 73 के आगे एक और छोटा vertical line draw कर. Right hand side. Right. Okay. 79. शुरू से नहीं कौन से शुरू से वहां तक सेट कर. यहाँ from 73. शुरू से मतलब क्या है? Yeah, forget. Beginning from origin, left hand side. Okay. Yes, sir. This side, sir. Entire area. Okay. Now from that shaded area, draw one arrow to the top and write 0.95. Okay. Entire area is 0.95. Is it clear, all of you? Yes, sir. Yes, sir. Now, what would be the area? Prerna, can you change the color of your pen? Yes, sir.
वेरी गुड, थैंक यू। अभी सुन, सेंटर से लेके राइट हैंड साइड तक एक हाँ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर। आर यू गेटिंग मी? yes sir from center या यहाँ तक हाँ। हाँ अभी एक आरो ऊपर खींच, वही शेडेड एरिया। What is the area? What is the probability? You write that 0.95 minus 0.5 0.45. 0.45. equals to 0.45. So here see refer the table. When probability is 0.45, what would be the Z value? जहाँ लाइन लिखा है ना, इसके नीचे 73 के साइड में Z वैल्यू लिख। श्रेयासी कोऑर्डिनेट हेल्प ऑफ Yes, sir. 73 के बाद लिख व्हाट इज द वैल्यू, Z वैल्यू। So at mean Z value is 1.65 Wow, right, 1.65 equals to शीतल, Z का फॉर्मूला क्या रहे शीतल? x minus 73 divided by deviation 6. Wow. Now शीतल coordinate help her, she should solve 1 to 1 बोल शीतल। उसके बाद x is equals to 82.9 इंच आएगा direct if you solve 82.9 82 रे। 82.9 sorry. inches. Wow. inches. Anybody having doubt on this question? No, sir. Sinjini, Yes, sir. stop sharing. Sinjini, you got a pen? No, sir, I don't have a pen. Why? You are penless? Sir, I'm not using the kit laptop because it was having some problem. Okay, Sambon. ଖାଇନୁ କିରେ, କଣ କରୁଛୁ? ପାଟି କରୁଛୁ କାହାକୁ? No, sir. You got a pen? Pen nahi, sir. ଆଉ କଣ ଅଛି? Any volunteer? अरे कोई तो आगे वॉलंटियर करो, सारे चुपचाप बैठे हैं। I have a pen. वेरी गुड। अभी प्रीवियस क्वेश्चन, मॉरिन लेविस वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वी ऑल विल हेल्प यू शेयर। थैंक्स रिद्धि। You got a question, you got the question Riddhi? You write question number 9, page number कितना? सुयासी, सुप्रतीक 81. 81. 81 सुप्रतीक help कर। sir. Draw the normal curve, Riddhi. Unmute कर। Riddhi, unmute yourself. हाँ, I haven't read the question. sorry. I haven't read the question. Just a minute. नहीं, we are helping you. Okay. She wants to publish some books, okay, and average is 11 months. So at center you write 11, नीचे लिख 11, और इसके आगे थोड़ा आगे राइट हैंड साइड ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन, पुट 12, ठीक है। फ्रॉम प्रीवियस ओरिजिन एक्सट्रीम लेफ्ट से 12 तक सेट कर। Very good. Now this area we want to find the probability, right? So Yes. 12 के नीचे रिधि write Z value, सुयासी coordinate help। 12 के नीचे like Z equals So to Z is equal to 12 minus 11 divided by 2.4. equals to how much? Equal to 0.41. 0.41 sir. 0.42. हाँ। So रिधि ऊपर जो 11 से लेके 12 तक जो शेडेड एरिया है, वो ही स्ट्रिप का एक आरो ऊपर खींच, शेडेड एरिया का आरो। ठीक है। Very good. And somebody should tell when Z is 0.41, what is the probability? So 0.1591. You write that. 0.1591. 1591. Okay. जो लेफ्ट हैंड साइड में है एरिया, वहां लेक 0.5,
अंदर लेक उधर लेक 0.5 ठीक है. So the total area is how much? Right hand side जो white space है वहाँ लेक total probability equals to 0.5 plus 0.1591, which is 0.6591. then we should multiply by 19. 19. Yes. आगे लेक multiplication into 19. वहीं लेख रहे 0.6591 के आगे 19 19. Yes. और जो भी होगा कितना हुआ? So 12.5 to something, but answer is 12. We have to make 12 only, right? Yes, sir. Really do one thing, you solve completely, neatly on a piece of paper and you circulate it, okay? Acha, just to save time, I know that there are many volunteers. Bhaskar, I'm troubling you again. Thoda dekh le, question number 6. We all are with you, will be helping you. Can you draw the normal curve and set the area for us? Which area probability you want to find? Elena, you have got pen? No, sir. Clear all, Bhaskar, clear all. Clear all. क्वेश्चन देखा नहीं मैंने. हाँ, बाकी लोग हैं ना हेल्प करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 6 का जो है नॉर्मल कर्व ड्रॉ करके. सुप्रतीक तेरे पास क्वेश्चन है रे सुप्रतीक? यस सर, यस सर. हाँ, भास्कर को कोऑर्डिनेट करके बोल, 1 to 1 बोल. हाँ. Like mu equals to 79. और ग्राफ डायरेक्टली ड्रॉ करो. ग्राफ इधर राइट हैंड साइड पे खींच और उधर लेके 82 और लेफ्ट हैंड साइड पे खींच और लेके 75 और सेंटर 79. सेंटर 79 और शेडेड एरिया ये वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला, राइट हैंड साइड वाला, नीचे नीचे वाला. हाँ हाँ यस यस, वेरी गुड. और लेफ्ट साइड, वेरी गुड. 75 और 82 का जेट कन्वर्ट करो. सुप्रतीक हेल्प कर. यस सर. So Z 75 का 0.8 and उसका 82 का 0.6 and probability for 0.8 is 0.2257. 75 का हाँ shaded नहीं इस साइड का yeah 0.2257 and इस 82 वाले साइड का 0.2881. एक मिनट 0.2881 I think opposite लिखवा दिया sorry. हाँ opposite लिखवा दिया. हाँ 0.2881 इस साइड का होगा और 0.2257 इस साइड का होगा. देन 1 माइनस ये दोनों को प्लस करके मतलब ये दोनों को प्लस करके 1 से माइनस कर देंगे. वन माइनस Then जो whatever you get multiply by with 200. हाँ ठीक है. Yes. I think it is clear. Now एक objective question we'll discuss. Can I ask you all to check
Set 3, question number 1B. Set 3, question number 1B. Page number बता दो. So page number 84. All of you have a look. Rubal, Shreya Roy, Anjali Sinha. Rubal, Shreya Roy, Anjali Sinha, you are there? Yes, sir. Yes, sir. Answer करो. Participate. अरे you have to voluntarily participate ना. कैसे होगा फिर? Question मिला नहीं मिला? हाँ मिला. अरे participate करो रे. Sir, if Z is the standard normal variate, shade the area by drawing the normal graph. कोई तो बोलो कैसे करेंगे? यहाँ normal table नहीं मिलेगा. Without normal table, from your common sense, how to find or know the probability? Okay, any volunteer who can suggest? जल्दी करो, सेव करो टाइम. Yes, sir. भास्कर. Again, sir. तो 0 से मतलब राइट साइड में होगा. 0 से Z का वैल्यू 2.58 तक. अरे तो फिर कैसे करेंगे? हाँ सब ग्राफ बना के बीच में से 0 होगा. Z का वैल्यू उससे 2.5 होगा. उसके बीच का सेट कर हो जाएगा. हाँ वैल्यू बताना कैसे करेंगे? The question is we have to tell कि what is the value. ये ना? Yes, sir. हाँ. तो सर टेबल से मिल जाएगा. टेबल देखना पड़ेगा. टेबल नहीं मिलेगा. वही तो बोला हूँ. बिना टेबल देख के हो सकता है? अरे क्वेश्चन में लिखा है कि टेबल नहीं मिलेगा. हमने कभी इस टाइप का इनडायरेक्टली डिस्कस किए थे? सुयासी, have I not asked you regarding the confidence interval? Yes, sir. What is 95% confidence? What is 99% confidence? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, all of you are forgetting fast. 1.96 से plus 1.96. इसका कितना है probability? 66 point something. अरे यार भास्कर कब है तेरा एंड सेम एग्जाम? अगले साल? 95%. 95%. Exactly 0.95. भास्कर. और यहाँ minus 2.58 से 99%. 99%. किए थे नहीं किए थे? Yes, sir. क्यों नहीं बोल रहा हो सुयासी? यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? देख रहे सुयासी. 0.99 divided by 2 होगा नहीं होगा? Yes, sir. Easy question or difficult question? बोल. It's an easy question. अरे सुन रे, थोड़ा बहुत तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन होगा ना. Yes, sir. नहीं तो मजा कैसा होगा? हाँ? एक क्वेश्चन में देखो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है लाइक दिस. भास्कर, आर यू क्लियर? डिस्कस किए थे रे भास्कर? सुप्रतीक इस टाइप का किए थे नहीं किए थे? यस सर. और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में से बहुत सारे जो क्वेश्चंस है वो भी थोड़ा देख लेना. वो एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं. आई जस्ट वांटेड यू टू रन थ्रू द प्रोसेस. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं. इधर डायरेक्टली x से z से प्रोबेबिलिटी निकालो, नहीं तो प्रोबेबिलिटी से उल्टा z वैल्यू और x वैल्यू निकालो. दोनों टाइप का क्वेश्चंस हो सकते हैं. ठीक है? एनी क्वेश्चन अप टू दिस or we move to the last section, that is testing of hypothesis. Any question? If you have got any doubt afterward also, you are most welcome. You can write to me through WhatsApp
phone mat karna. Actually, I may not pick up phone. Maybe I will be busy, but I would surely love to respond to you same day. Okay. Now moving forward, next is our testing of hypothesis. I would request you all to please think कि क्वेश्चन किस टाइप का होगा और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है व्हाट फॉर्मूला विल बी अप्लाइड। ऑल ऑफ यू लिसन टू मी। जो हमने डिस्कस किए थे, फ्रॉम वन एंगल वी मे हैव वन टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट। ओके, फ्रॉम अनदर एंगल वी कैन हैव large sample test or small sample. Okay, if you club it together, please remember we can have 4 situations. If you remember this matrix, it will be easier, right? Who can answer me yahan is case mein situation number 1, what will be the formula? Sohan? Sir, don't remember. Pass. अरे इजी क्वेश्चन रे, एक्स बार माइनस म्यू बाई सिग्मा रूट एन। अरे नेक्स्ट वीक ही एग्जाम है, इसको जेड बोलते हैं, ठीक है। सोयासी, व्हाट इज द फॉर्मूला हियर? दिस विल बी टी टेस्ट एंड द ओनली डिफरेंस इज यहाँ एस होगा, ठीक है। क्वाइट सिमिलर, इजी टू रिमेम्बर। इस टाइप का मैट्रिक्स बनाओ, इजी होगा, ठीक है, राइट। Mostly in exam you will be getting value of standard deviation, so there is no problem. In case by chance, rare chance, if standard deviation is not given, how do we find S value? So x square minus x bar square into 1 minus 1 by n minus 1. हाँ, n minus 1, ठीक है। Yes sir. स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला था 1 by n समेशन x minus x bar होल स्क्वायर, ठीक है। Yes sir. और s होगा क्या? यहाँ n minus 1, जस्ट रिमेम्बर, ठीक है। Yes sir. और यहीं से हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कॉन्सेप्ट लिए थे। यू रिकॉल टी टेस्ट का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है n minus 1. Yes. Just a brain teaser, सुप्रतीक, सोहन, भास्कर, अभिजीत। अभिजीत देवनाथ बोल रहे, सपोज यू गॉट 5 वैल्यूज 15, 11, 20, 25, 31। इसका सैंपल स्टैंडर्ड डिवीएशन कैसे निकाल सकते हैं? सोच के बताओ अभिजीत, सोच के बता। अभी फॉर्मूला मैंने दिया है, इजी क्वेश्चन रे, इजी, गिव इट ट्राई। सोहन, देन सुप्रतीक। अरे जो फॉर्मूला लिखा है अभी देखो ना, सुप्रतीक बोल रहे पहले एक्स बार निकालो। एक्स बार निकाल सकते हो नहीं? यस सर। Yes sir. ये वैल्यू जो है इंडिविजुअली, हाँ सर, और x माइनस x बार करो, x माइनस और इसके आगे x माइनस x बार होल स्क्वायर। यही तो है ना। Yes sir. अभिजीत इजी रे, Yes. डिफिकल्ट नहीं रे, ठीक है। नाउ if you check the handbook list of formula what we had given here सुयासी, यहाँ भी जेड टेस्ट होगा, लेकिन न्यूमरेटर में 2 मीन होंगे, x1 बार माइनस x2 बार होल डिवाइडेड बाय 2 स्टैंडर्ड डिवीएशन होंगे, सिग्मा 1 स्क्वायर। ऑल ऑफ यू राइट द फॉर्मूला, प्रैक्टिस करो सो दैट इट विल बी इजी। सिग्मा 2 स्क्वायर बाय n2, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। सुयासी, गिव इट ट्राई, लुक टू योर सीलिंग, ऊपर देख, बोल ये फॉर्मूला बोल। So x1 bar minus x2 bar divided by sigma 1 square by n1 plus sigma 2 square by n2 root over. वाह वाह, थोड़ा सोचो, इट्स नॉट डिफिकल्ट एंड वी कैन डू दिस, ओके। एंड इसके आगे
one point you are also noting it down, whether it is one sample or two samples. ठीक है? Yes, sir. ये भी याद रखना. ठीक है? Now t-test, z-test, I have put this in matrix form. Chi-square also 2 questions you have solved. You do practice. I'll be just giving you one example which I had not solved. Then that would be a bit clear. That is question number 8A, set 2. Shreyasi, first you locate the question, then you tell others about the page number. Page number 84. Abhi, all of you look to my screen. This is the question, I guess. Yes, sir. Okay. All of you please think what should be done. If this is the question, what should be done? Supratik, give a try. ये one sample या two sample? Sir. अरे ये one sample या two sample? Two sample. Very good. Large sample या small sample? The small. Large sample. Large sample. N को देखना. Yes, sir. So which formula we should apply? अभी जो सुएज को मैं बोल रहा था. हाँ वो वाला x bar. ठीक है. x1 bar minus 1. हाँ सुप्रतीक एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले. You will be solving this. और ये हैंडबुक में भी है. इजी के लिए मैं बोल रहा हूँ. Can I stop sharing? Okay, you share your whiteboard and solve it. ये अभी हम this is the last question. David Mondal, David, you are there? Sir, yes, sir. हाँ थोड़ा participate कर रहे David. You participate with Supratik. Question है तेरे पास David? Sorry, sir. अरे participate करना चाहिए ना. अभी देख सुप्रतीक क्या कर रहा है. Okay, sir. You write directly formula. Supratik, we all will help you. Bhaskar थोड़ा help कर दे. Formula बोल. Z equals to x1 bar minus x2 bar divided by sigma 1 by n1 sigma 1 square by n1 पूरा रोटा का दे दे. हाँ पूरा रोटा का दे दे. ऊपर देख. और नहीं हो रहा है. क्या हो रहा है पता नहीं सर. फिर से कर. फिर से स्टॉप करके शेयर कर हो जाएगा. हाँ शायद. सर ये क्या हो रहा है. अच्छा भास्कर टेक ओवर कर फटाफट. सेव टाइम सेव करते हैं. यू स्टॉप शेयरिंग. सुप्रतीक तू बोल नंबर्स बोल उसको. Z equals to x1 bar minus x2 bar by root under of sigma 1 square by n1 plus sigma. वैल्यूज बता रहे वैल्यूज. 75 minus 70 minus plus 80. 70 by root under of by 15 square by 150 plus 20 square सोहन कैलकुलेट करके कैलकुलेटर यूज by कर. सोहन 250 वैल्यू बता. by 250 250. कोई कैलकुलेटर यूज करके बताओ. Sir, 2.84 answer. Very good. Directly लिख रहे 2.84. Okay. Now अभिजीत ये वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? अभिजीत Yes, sir. ये वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? Z squared. Supratik, what do you call this value? the calculated value.
Yes. वो है कैलकुलेटेड वैल्यू, आप टेबुलेटेड वैल्यू से कंपेयर करना। हाँ, अच्छा. So this calculated value is 2.84 and this is to be compared with tabulated value. टेबुलेटेड वैल्यू। जो भी tabulated value है सो उसके बता वैल्यूज आर क्या क्या है 1.96 होगा 2.58 होगा 2.33 होगा 1.645 जो भी है ये कैलकुलेटेड इज हायर ठीक है so directly भास्कर लिख दे this calculated value is much higher than all tabulated value ये सभी से हायर है ठीक है if calculated value is greater what do you do what are the conclusions we are seeing So null hypothesis will not be considered. Sir, we reject it. First you write we reject null hypothesis we reject null hypothesis ठीक है कोई गेस करके बताएगा यहाँ null hypothesis किस टाइप का हो सकता था सुप्रतीक यहाँ null hypothesis क्या होगा रे there is no difference null hypothesis हमेशा will be no difference between boys and girls GK scores वो रिजेक्ट हो गया भास्कर ये सेमेस्टर का लास्ट सेंटेंस तू ही सुनाएगा ठीक से बोल इसका मतलब इंटरप्रिटेशन क्या होता है लुक टू द लास्ट सेंटेंस ऑफ द क्वेश्चन को देख ले व्हाट शुड वी कंक्लूड So we will conclude that there is a difference between the score of boys and girls. They differ significantly. Yeah. वही तो क्लियरली लिख सकते हैं ना जो क्वेश्चन में लिखा गया है वही लिख yes GK scores differ significantly among boys and girls. Okay. Thank you. Stop sharing. So I'll be concluding here.